So in today's video, we are going to talk about the basic statistics. First of all, we are going to know what is a data or what is a data matrix. Once we're done with the data matrix, second, we want to know what is meant by variables. Then observations. So we are going to talk about the data matrix, variables, observations, and then relationship between the variables. So relation between the variable. Okay, so let's first understand what is a data matrix or data matrix or a data or a data. What is mean by data matrix and a data? We are going to talk about that. So basically, data, usually you have seen that Excel sheets, right? What happened in Excel sheet? We have a data in number of columns and then we have number of rows. Suppose this is a column number 1, 2, 3, and then again we have a rows like 1, 2, 3, 4, right? In this, our data is stored. So data is stored in the format of number of columns and number of rows. Okay. So these columns, we consider it as a one variable, right? So these column means column 1 will be considered as a first variable, column 2 will be considered as the second variable, or column 3 will be considered as the third variable, right? So columns in data set, it considered as the variables. Okay. Then we have the rows. Okay. So the rows in the data set will consider as the observations. Observations. For example, if you see that we have a data, right, in which roll number suppose given here. Suppose we have a roll number, then we have name, and then we have a marks. Okay. So these are suppose these are our data set. So this roll number is a one variable, name is another variable, and then this marks is another variable, right? Then we have observations here. For example, roll number 1, name as Mrunal, and suppose marks is as 67%. Roll number 2, suppose Rutuja, then marks we have 55. Okay, so these Mrunal, Rutuja, these marks, all these will be considered as the observation, right? So number of rows will be considered as our observations. Okay, and our number of columns will be considered as the variables. Okay, so how we define a variable? Variable is the entity which are changing its value according to the time. For example, we can consider that height is one of the variable. Okay, then weight is another variable. Okay, then health is another variable. So these are three variables, and we have some observations here that height is 65 centimeter, 150 centimeter, then weight is 67 kg, 78 kg. Okay, and then the health is good, bad, right? So these are the observations. Okay, so now I think you all are clear with the data matrix. What is observation? What is a variable? Right. Now we are going to talk about the type of the variable. Very much important. Types of variable. Very important topic. Before
applying any concepts of statistics, any algorithm of machine learning, you should know what is the type of your variable, right? So there are two types of variable. One is numeric variable. Second, we have categorical variable. One, we have a numerical variable, and second, we have a categorical variable. तो अब जब न्यूमरिक वेरिएबल, तो इससे हमें न्यूमरिक से ही हमें वी आर गेटिंग एन आंसर दैट न्यूमरिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द नंबर्स. ओके, मीन्स हमारा वेरिएबल है सपोज हाइट. तो हाइट हमेशा नंबर्स में डिफाइन की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल 67 सेंटीमीटर और 5.7 फीट, राइट? तो ये जो हमारा हाइट वेरिएबल है, इसके जो ऑब्जर्वेशन है दे आर न्यूमरिक इन नेचर. उनकी ये हमेशा नंबर्स में है. दैट इज इट इज अ न्यूमरिकल वेरिएबल. सो इट इज नोन एज न्यूमरिकल वेरिएबल. ओके, अगर हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है, दैट मीन्स हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं गुड, बैड, बेटर or anything, okay? Or suppose pass, fail, yes, no, yes or no. So all these will be considered as the categorical variable. Category means in there are 2 or 3 category. Yes or no is one category. Pass or fail is again category, right? तो जब भी हम कैटेगरिकल वेरिएबल होता है तब हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं. और फॉर न्यूमेरिकल वेरिएबल देयर इज अ डिफरेंट मेथड. ओके, तो अभी जब हम न्यूमेरिकल वेरिएबल स्टडी करेंगे, सो न्यूमेरिकल वेरिएबल इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. न्यूमेरिकल वेरिएबल जो है उसके अगेन 2 पार्ट्स है. ओके, और उससे पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी न्यूमेरिकल वेरिएबल है ना, दे ऑल आर इन नंबर्स, राइट? तो हम उनको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. मीन्स एक क्वांटिटी है, राइट? नंबर्स क्वांटिटी में हम मेजर कर सकते हैं. दैट इज व्हाई numerical variable are known as the quantitative variable, and categorical variable will be considered as qualitative variable. Okay, so ये just दो different names are given here, qualitative and quantitative. Okay, again अभी हम numerical variable देखेंगे. numerical variable जो है, it is divided into 2 types. One is continuous, another one is discrete. Okay, so continuous variable and discrete variable. तो ये जो न्यूमेरिकल वेरिएबल है, न्यूमेरिकल वेरिएबल मीन्स टेकिंग नंबर्स. ओके, तो इसके अभी 2 पार्ट्स है, कंटिन्यूअस एक है और डिस्क्रीट एक है. तो व्हाट इज कंटिन्यूअस एंड व्हाट इज डिस्क्रीट? सो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स जो होता है ना, उनकी जो वैल्यूज होती है वो हमेशा पॉइंट्स में होती है. फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे 0 to 1 कंसीडर करोगे तो इसके बीच में देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर. फॉर एग्जांपल 0.5, 0.05, 0.
9999. So ऐसे बहुत सारे numbers है, right? So these means these are numbers are continuous, right? So these like point में उनका value आ रहा है. So this is continuous, right? अभी हम for example hemoglobin हम consider कर सकते हैं हमारा hemoglobin. तो ये हमेशा ऐसे होता है 12.5, 6.5. Sometimes it is 11 or 10 or 4 also. But हमेशा ये point में भी ये value देता है. So this is continuous variable. For example, your weight can be a continuous variable. For example, कोई लोग है जिनका weight है suppose 67 kg.5. So this is a continuous variable, right? Height 5.7 feet. ऐसे हम बोलते हैं, right? 6.1. So this is a continuous variable. Means point में उसका आंसर आ रहा है. अभी discrete variables, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास. तो हमेशा वो क्या होंगे? 1 2 3 ऐसे वैल्यू लेगा. स्टूडेंट कभी भी 4.5 नहीं हो सकता. दिस इज इम्पॉसिबल, राइट? तो ये क्या होगा? होल नंबर, पूरा इंटीजर की वैल्यू लेगा, राइट? दैट मीन्स पूरा होल नंबर कंसिडर करेगा. 3 4 100 200 ऐसे 40 50. सो ये क्या होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट्स ऑन रोड. ओके, एक्सीडेंट्स ऑन रोड. तो हमेशा हम कैसे बोलेंगे कि देर आर 2 एक्सीडेंट्स, 3 एक्सीडेंट्स. मतलब कोई भी रोड है उस पर कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 2 एक्सीडेंट्स हुए, 3 एक्सीडेंट्स हुए. हम कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि 3.5 एक्सीडेंट हुए हैं, राइट? सो दिस इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल मीन्स क्या? वो पूरी वैल्यू लेता है, लाइक 3 4 100 300 ऐसे. ये पूरे क्या है? नंबर ऑफ डेज. ये पूरा क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल. अगर हमने नंबर ऑफ डे कंसिडर किया, नंबर ऑफ डेज, तो हमेशा ये क्या होगा? देर आर 30 डेज, 31 डेज, 28 डेज, राइट? तो हमेशा हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि देर आर 28.5 डे, राइट? सो हम ऐसे कभी भी नहीं बोलते. सो दिस अ डिस्क्रीट वेरिएबल. नाउ दिस कैटेगोरिकल वेरिएबल, categorical variable that is known as qualitative. इसके भी अभी 2 पार्ट्स है. फर्स्ट वन इज नॉमिनल एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनल. what is nominal and what is ordinal here? For example, अगर आप yes no कंसिडर कर रहे हो, so this is a nominal, right? yes no कंसिडर करो, या फिर आप कंसिडर कर रहे हो names. names is also categorical variable, right? या फिर city का name आप कंसिडर कर रहे हो, city name, right? तो ये भी क्या हो जाएगा? कैटेगोरिकल वेरिएबल. बट कैटेगोरिकल वेरिएबल में ये किस में आ जाएगा? अभी नॉमिनल वेरिएबल इट विल बिकम. व्हाई इट विल बिकम इन द नॉमिनल वेरिएबल? बिकॉज हम कभी भी इसको ऑर्डर कंसिडर नहीं करेंगे. नेम कुछ भी हो सकता है, मृणाल, ऋतुजा, अभी, राइट? सो देर आर मेनी नेम्स. तो हम नेम कभी भी ऑर्डर में हम नहीं लिखेंगे, ऐसे ही हम ऐसे डाल देंगे, ऐसे ही नेम्स हम लिख लेंगे. सिटी के नेम भी हम पुणे मुंबई ऐसे ही हम नेम्स लिख लेंगे, राइट? सो देर इज नो एनी डिफाइंड ऑर्डर. सो देर इज नो डिफाइंड ऑर्डर. तो वो क्या हो जाएगा? नॉमिनल डेटा. नो डिफाइंड ऑर्डर, ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है. सो दैट इज वाई इट इज नोन एज दी nominal data set. Then just category है, categories are there, okay? उसमें कुछ भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप ब्लड ग्रुप भी कंसिडर कर सकते हो, राइट? ब्लड ग्रुप, इट कैन बी ए, इट कैन बी बी, इट कैन बी ए बी, इट कैन बी ओ, राइट? ऐसे कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज द कैटेगोरिकल वेरिएबल. बट इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, राइट? कोई भी ऑर्डर नहीं. इफ यू कंसिडर द ग्रेड्स, तो देर इज अ ऑर्डर A plus, right? B,
सी। तो ग्रेड में क्या है, ऑर्डर है। ए प्लस मीन्स उसके परसेंटेज कितने होंगे, ऑब्वियसली अबाउ 90 होंगे। ए होगा तो 80 to 90 होंगे, बी होगा तो 70 to 80 होंगे, राइट। सो देयर इज अ डिफाइंड ऑर्डर, देयर इज अ डिफाइंड ऑर्डर, right? So in grades there is a defined order, so that is why it is known as, this type of data set, it is known as order variable or ordinal or ordinal ordinal variable. Okay, we'll revise these things again and we'll stop it for today. Okay, so हमने क्या क्या देखा था, हमने ऑब्जर्वेशंस देखे। ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, सो नंबर ऑफ रोज जितने भी है, रोज में जितने भी हैं वो सारे ऑब्जर्वेशंस हम कंसिडर करते हैं। कॉलम भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं, बट फॉर एग्जांपल ऐसे हाइट दिया है, वेट दिया है, राइट, और उसके वैल्यूज है, सपोज 5.7 और 6.7 और उसकी सपोज वेट है 67 और समथिंग, कुछ भी 4.1 और उसकी वेट है 30. So these are observations, these are considered as the observations. Okay, और ये जो है हाइट वेट और कुछ भी जो भी कॉलम्स हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं, वेरिएबल्स। क्या कंसिडर करते हैं, वेरिएबल्स। ओके, नाउ वी विल सी कि देयर आर टाइप्स ऑफ वेरिएबल। कौन कौन से टाइप है, न्यूमेरिकल वेरिएबल को ही हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, बिकॉज वो नंबर्स में होते हैं, देयर आर सम क्वांटिटेटिव वेरिएबल। देन वी हैव कैटेगोरिकल वेरिएबल को ही हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। अगेन ये जो न्यूमेरिक वेरिएबल है इसके टू टाइप्स होते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल के, नॉमिनल मीन्स ऐसे ही नेम्स वहां पे है, राइट, दे डोंट फॉलो एनी ऑर्डर, ऐसे ही नेम ऑफ द सिटी, देन एड्रेस, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट, ऐसे ही पास फेल, yes or no. So these are the blood groups, so these are the example of a nominal data set. Ordinal means there is a order, good, better, best, ये order है, right. Then grades, this is a order data, right, कि वहां पे एक order follow की जाती है, so this is ordinal data. Okay, so this is for today, so we will see the next topic in next session.